Hey guys, everybody, good afternoon. Just do an audio video check. Am I live? Yes, I am. And I welcome you all to the L3, lecture number 3 of financial statements of NPO, जहां पर हम लोग करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चंस and you guys are gonna enjoy every moment of this. दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. आज दोस्तों हमारा सेशन कुछ अर्ली हो रहा है. हमारा scheduled time is 5 p.m. but due to some medical emergency in the family, I did not want to cancel my class, and that is why I have preponed it by 30 minutes. All right, so we're going to wind up this session by 5:15, 5:20. Then I'll have to leave to see a doctor, दोस्तों. And आज के लिए प्लीज बियर विद मी. आई नो आप लोग कहीं ना कहीं एवरीबडी वांट्स कि भाई टाइम से टाइम क्लासेस हो, लेकिन आज के लिए यू विल हैव टू बियर विद मी. ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं आप लोगों के साथ लेकर चल रहा हूं आप लोगों को दोस्तों ऑन टू द क्वेश्चन दैट वी वर सपोज्ड टू डू टुडे. बैलेंस शीट, ये सारे ट्रीटमेंट्स हम लोग सीख चुके हैं. हाय शंकर, गुड इवनिंग. Question number 4 is what we need to take care of, and these are some additional information in relation to question number 4, and I have left the question number 4 answer blank because you and I as a team will have to take care of it. You and I as a team will have to fill it up. हमें इसको भरना होगा. All right, Shankar, are you ready to help me out filling the solution number 4? Superb. क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है. फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू बर्ड 40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप लोगों को दिया हुआ है. यू एंड आई विल टुगेदर हैव टू मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Receipt and payment account for the year ended 31st March 2020 आप लोगों के सामने. Receipts on the debit side, balance brought down. Subscription for the year 2018-19, for the year 19-20, donation and entrance fees. So these are the receipts. अब out of these receipts we need to take care of only the revenue nature incomes and the revenue nature expenditures of the current year, of the year 2019-20. Everybody has to understand this point. While making income and expenditure account, you only need to take care of the current revenue and expenditure. Current मतलब which relates to the year जिसकी आप financial statements बना रहे हो. So you will have to only take all those points which relates to the year 2019-20. On the credit side we have payments, salaries and wages, office expenses, sports equipments, telephone charges, electricity charges, traveling and conveyance, and by balance carried down. Moving on, we have additional information. Outstanding subscriptions. Now everybody will have to help me out. Outstanding subscriptions for the year ended 31st March 2020, 55,000. For the year 19-20 we are preparing financial statements, and they are stating in additional information number A for the year 2020 ending 31st March 2020, 55,000 rupees के subscriptions अभी भी pending हैं, अभी मिले नहीं हैं. तो क्या does they relate to the year 19-20? The answer is yes. So what am I supposed to do? Shankar, help me out. मुझे क्या करना होगा इन 55,000 का? सर आपको ये 55,000 आपको ऐड करने पड़ेंगे. You will have to plus 55,000 into your subscription amount. ऐड करने पड़ेंगे. Next, outstanding salaries and wages. Next point, outstanding salaries and wages. 40,000 rupees for the year ended 31st March 2020. तो आपको इस साल की salaries and wages that you have paid, ये जो आपने पे किया है वो तो है ही है. अभी 40,000 is still outstanding. 40,000 is still outstanding. 40,000 still relates to the year 19-20. तो हमें इसका क्या करना होगा?
हमें इसे भी जोड़ना होगा, इसे भी जोड़ना होगा. This also should be added. Well done, Shankar. Depreciate sports equipments by 25%. So what I'm going to do is I am marking A for adjustment in the points which requires adjustments. Sports equipments you will have to depreciate. So A representing adjustments. A representing adjustments. So at the time when I come to each and every of that point, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें एडजस्टमेंट है. We will have to depreciate sports equipments by 25%. So the value of the sports equipment shall be reduced to 75%. 25% will go on to income and expenditure account. Income and expenditure account. Debit side. Debit side. Next, capitalize 50% of entrance fees. Capitalize 50% of entrance fees. Entrance fees generally is 100% capitalized. However, they are asking you to capitalize only 50%. Then the remaining 50% will be shown as an income in the income and expenditure account. Everybody has to understand. Had they would have not given any information, I would have added the entrance fees into the capital fund in the balance sheet. I would have not dealt with it in the income and expenditure account. However, they are saying capitalize only 50%. So what shall happen to the remaining 50%? बचे हुए 50% का क्या होगा? The remaining 50%, guys, the remaining 50% will be shown as an income on the income and in the income and expenditure account on the credit side. So guys, what we are gonna do is we're gonna take one point at a time. We're gonna start with the receipt side. The receipt side, दोस्तों. So if we take one point at a time, there is a good amount of possibility that we will be able to cover up every point. We will not be omitting any point. And secondly, you will be taking care of the adjustments then and there. आ जाओ. सबसे पहला था बैलेंस ब्रॉट डाउन. इट्स नॉट एन इनकम. ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है. ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है. कहां जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है. ओपनिंग बैलेंस शीट में. सब्सक्रिप्शन 18, 19, 19, 20. अच्छा, आउट ऑफ दीज टू what is the subscription that I need to take? Should I take both? Everybody? Haji guys, everybody, should I take both or should I take only of the year 1920? Only of the year 1920, because 65,000 they specifically are mentioning on to the receipt and payment account. 65,000 relates to the year 1819. We are preparing financial statements of the year 1920. So this 1819 65,000 that I have received is not an income for this year. What is the income for this year? It is 3,55,000. So what I'm gonna do is on the credit side I'm gonna write by subscription. On the credit side I'm gonna write by subscription 3,55,000. 3,55,000. add इसमें जोड़ना है. देखो एडजस्टमेंट था. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग 31st, ड्यूरिंग दिस ईयर. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2020. तो एड outstanding subscription on 31st March 2020, 55,000. Total subscription 4,10,000 rupees. 4,10,000 rupees. Moving on, now we have taken care of the subscription point. 2 donations
again 55,000, donations 55,000, by donations 55,000, and next by entrance fees, एंट्रेंस फीस कितनी लेनी होगी गाइस? एंट्रेंस फीस कितनी करनी होगी? 85,000 है, 85,000 उसका आधा 42,500 एंट्रेंस फीस कितनी करनी होगी गाइस? 42,500, क्योंकि आधा तो हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, आधा द रिमेनिंग हाफ will be shown as an income. The remaining half will be shown as an income. I do not see any other income to be reflecting onto the credit side of the income and expenditure account. So we have taken off all the receipts. Now moving ahead with salaries and wages. Salaries and wages 1,65,000. However, there is an adjustment, and that adjustment is that you will have to add 40,000. So on the expenditure side, the debit side, to salaries and wages, 1,65,000, add 1,65,000, add outstanding for 2020. Outstanding for 2020 40,000, 2,05,000 रुपए, 2,05,000 रुपए. Moving on, salaries and wages हो गया है. ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000 लिख देते हैं. to office expenses, $35,000. Next, to depreciation on equipment, depreciation on sports equipment. यही था ना दोस्तों, 25% डेप्रिसिएट करना था हमें, 25% डेप्रिसिएट करना था. तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 3,42,000 है, उसका 25%, 3,42,000 है, उसका 25%. हाय निवेदिता, हाय निवेथा, सॉरी नॉट निवेदिता, निवेथा. 25%, 3,42,000 का 25%, 85,500. Next point, telephone charges 28,000, electricity charges 32,000. तो 28 and 32 to 2 telephone charges 28,000, electricity charges 32. I hope each and every one of you is penning down with me, guys. It is very, very important for us to understand this point. The more we practice, the more we write it down by our own hand on a piece of paper, it is gonna substantially increase your confidence while solving the question on your own. By traveling and conveyance, so to traveling and conveyance 65,000, Now I have taken off all the points and all the adjustments. See, subscription done, salaries done, depreciation done, and the last adjustment, capitalized 50% of the entrance fees, has now been taken care of. I have also taken care of all the receipts and payments. Now we will have to identify which side is more, which side is higher. Haji guys, higher.
तो 4,10,000 रुपीज ऑन द क्रेडिट साइड, इनकम साइड चलते हैं, प्लस 55,000 प्लस 42,500, टोटल इज कमिंग आउट टू बी 5,07,000, 5,07,500, 5,07,500. It seems that the income is more, then we will arrive at surplus 5,07,500, 5,07,500 minus 205, 35 minus 85,500 minus 28,000 minus 28,000 minus 32,000 and minus 65,000. Finally answer coming out to be 57,000. Final answer coming out to be 50,000. हाँ जी गाइस, तो ये आपका आता है, ये आपका आता है गाइस टू सरप्लस excess of income over excess of income over हाँ जी 57,000 rupees. Or what is the treatment of surplus? Sir, surplus will be added in the balance sheet, the closing balance sheet in the capital fund. Surplus को जोड़ा जाएगा in the closing balance sheet in the capital fund. Everybody clear about it? Everyone clear about it? Perfect. Should we move on? Should we move on? Moving on to the next question, guys. Moving on to the next question. From the following information of a club, from the following information of a club, show the amount of match expenses and match fund in the appropriate financial statements of the club for the year ended 31st March 2020. They are saying match expenses paid during the year 31st March 2020, 1,10,000 rupees, and match expenses 1,10,000 rupees. Match fund on the first day of the financial year 30,000 का हमारे पास मैच फंड था. डोनेशन फॉर मैच फंड, तो आपको डोनेशन मिला तो 30 प्लस 55 हो गया 85 रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. नेक्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स, मैच टिकट्स बेचे और उस पर भी कुछ प्रोसीड्स मिले, तो ये भी हमारा ऐड हो गया इन द मैच फंड. So we had an opening match fund of 30,000. We received donations worth 55, so it came out to be 85. Further, when we sold out the match tickets, we further received 20,000. So the total amount in hand that I have is 1,05,000 rupees. Total amount in hand that I have is 1,05,000 rupees. Ab everybody, please make sure the match expenses that were incurred were 1,10,000. मैच एक्सपेंसेस कितने थे? 1,10,000 के थे. मैच एक्सपेंसेस कितने थे? 1,10,000 के थे. तो 5,000 रुपए के ज्यादा खर्चे हो गए. 5,000 रुपए के ज्यादा खर्चे हो गए. तो हाउ आर वी सपोज टू शो इट? First we'll go into the balance sheet. Guys. और बैलेंस शीट में आपका यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैच फंड, हाँ जी गाइस, मैच फंड 30,000. एड डोनेशंस for match fund, $55,000. Add
sale of match tickets, $20,000, total coming out to be 1,05,000, less match expenses, I know the total amount of match expenses is 1,10,000. However, मैं reduce तो कितना कर सकता हूँ? 1,05,000 ही कर सकता हूँ ना, मैक्स से मैक्स तो, because मेरे पास फंड्स उतने नहीं है. तो सर, what shall happen of the remaining 5,000? The remaining 5,000, guys, the remaining 5,000. यहां पे ध्यान से देखेंगे, नोट डाल रहा हूं, remaining 5,000 will be considered to be an expenditure and will reflect in the income and expenditure account. The remaining 5,000 will be shown as an expense into income and expenditure account. Remaining 5,000 क्या होगा दोस्तों? It will be shown as an expense into income and expenditure account. Everybody clear about it? Moving on to the next question. करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो. Oh my God, बड़ा क्वेश्चन है. आ जाओ भाई. Everybody clear? बढ़े आगे. Let us move forward, guys. During the year ended 31st March 2020, for the year ended 31st March 2020, the subscription received by the Jaipur Literary Society were 4,50,000 rupees. During the year ended 31st March 2020, the subscription received by the Jaipur Literary Society were 4,50,000. 4.5 लाख रुपए का उन्हें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ. कितने का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ? 4.5 लाख रुपए का. These subscriptions include 20,000 rupees received. These subscription include 20,000 received for the year ended 31st March 2019. मतलब ये पिछले साल के हैं, मेरे भाई. तो मैं क्या करूंगा 20,000 को गाइस? मैं क्या करूंगा? मैं माइनस करूंगा. This subscription includes 20,000 received for the year ended 31st March 2019. On 31st March 2020, इस साल subscriptions due but not received. Subscriptions due but not received होना चाहिए दोस्तों. ये यहां पर not लिखना रह गया. But not received were 15,000. Subscriptions due. इस साल के outstanding subscriptions कितना है? 15,000 रुपए. ये आपके ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये इस साल के हैं. एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ध्यान से दोस्तों, अब एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 but pertaining to the year 2021, received in this year but for next year.
if we are trying to compute the amount of subscription received for this year, everybody has to be very, very careful. If we are trying to compute the amount of subscriptions for this year, we will have to eliminate the subscriptions that are relating to the future years or the preceding years. Future years or preceding years. So this is in relation, 26,000 is in relation to future years, it will be reduced, minus किया जाएगा. The subscription received for the year ended 31st March 2020 include the advance received. Everybody, the subscription received for the year ending 31st March 2020 include the advance received for the year ending 31st March amounting to 18,000. Amounting to 18,000 मतलब 2019 में आपको एडवांस मिला, कौन से साल के लिए मिला होगा? एडवांस तो हमेशा आगे वाले साल के लिए होता है. तो दोस्तों 18,000 2019 में मिला, बट इट रिलेटेड टू 2020, तो इसे जोड़ा जाएगा. व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड? व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड गाइस? एक बार आप लोग मेरे साथ फटाफट कैलकुलेटर पर तो निकाल ही दो फटाफट. 4,50,000 रुपए -20,000 प्लस 15,000 -26,000 प्लस 18,000. तो 4,37,000 is the amount which will be reflected on the income side of the income and expenditure account. 4,37,000 is the amount that will be reflected. Everybody clear about it? Everybody clear about it? क्या मजा आया दोस्तों ऑन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पॉइंट? आई होप गाइस नए पॉइंट्स हैं दोस्तों. अब आप लोगों को क्या बोला है दोस्तों? क्या बोला है कि आप लोगों को दोस्तों यहां पर दिखाना है सॉल्यूशन में. क्या दिखाना है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट वाला दिखाना है. अब जब आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, मैं नॉर्मली बोलता हूं दोस्तों, अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 4,50,000 का, तो आपने एंट्री क्या करी होगी? सर हमें जब रिसीव हुआ पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, वेल डन, बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन हाँ जी गाइस, 4.5 lakhs. अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट के तो आप क्रेडिट साइड में जाके लिख सकते हो ना, यहां पर बाय बैंक ऑब्लिक कैश द सब्सक्रिप्शंस दैट यू हैव रिसीव्ड 4,50,000 रुपीज. 4,50,000 रुपीज. मैं आप लोगों को बहुत बेसिक चीजें सिखा रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही बेसिक चीजें. These subscriptions include 20,000 received for the year ended 2019. हमें हटाना है, हटा दो भाई. To outstanding subscriptions of 2019. To outstanding subscriptions 2019. जो दोस्तों जो आप लोगों का पिछले साल का है, अगले साल का है, वो हटाओ. अब हटाओगे कैसे? ऑन द अदर साइड लिख के. 2019 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 20,000 रुपीज. 20,000 रुपीज. उसके बाद दोस्तों, ऑन 31st मार्च सब्सक्रिप्शंस ड्यू बट नॉट रिसीव 15,000 इसी साल के हैं. चलो भाई, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 2020 15,000 रुपए. उसके बाद दोस्तों
एडवांस सब्सक्रिप्शन पर्टेनिंग टू 2021 प्रीपेड, अगले साल के लिए पे कर दिया, यहां लिख दो भाई टू एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 कितना अमाउंट है गाइस? 26,000। नेक्स्ट, द सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 18,000 आपका दोस्तों 2019 में मिला था, लेकिन था वो 2020 का, तो बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन 2019 वाला कितना था गाइस? 18,000। अब आप लोग बैलेंस दोस्तों निकाल सकते हैं। टोटल इधर का क्रेडिट साइड का निकल कर आता है 450 प्लस 15,000 प्लस 18,000, 4,83,000। इसमें से माइनस करेंगे 20,000 माइनस 26,000, 4,37,000 माइनस करेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो जाएगा दोस्तों इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस, जो आप लोगों का दोस्तों 2020 से रिलेट करता है, जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपका निकल कर आता है 4,37,000। 4,37,000। I hope guys I have made myself pretty clear onto this point to each and every one of you. मजा आया in order to understand this point? मजा आया शंकर? For all those students who are joining me at this point of time guys, मैं आप लोगों को बता दूं, ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी इनटू द फैमिली, आई हैड टू प्रीपोन माय क्लास by 30 minutes. All right. सर मैं लेट हूं या जल्दी क्लास स्टार्ट है? आज जानवी जल्दी क्लास स्टार्ट हुई है, निशांत, जानवी, सचिन, बिकॉज गाइस कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आई हैड टू टेक अ लीव, सो आई प्रीपोन्ड द क्लास बाय 30 minutes एंड आई आल्सो मेड एन अनाउंसमेंट। जो आज का चैलेंज क्वेश्चन था दोस्तों ऑन द अनअकैडमी वाले चैनल पर, आज दोस्तों मैंने आप लोगों से वो एक चैलेंज क्वेश्चन डाला था। उस चैलेंज क्वेश्चन के थ्रू प्रॉबेबली आप लोग वो कर सकते थे, पता चल जाता। उसमें मैंने ना क्लियरली मेंशन किया था कि आज मेरे को जल्दी जाना होगा बिकॉज मुझे डॉक्टर के पास पहुंचना है बाय 5:45 एंड इट्स लाइक 20-25 minutes अवे। ऑलराइट गाइस, सो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम टुमारो ऑल्सो, टुमारो इज सैटरडे बट आई हैव अ क्लास दोस्तों, सेम टाइम 5 बजे मुलाकात करेंगे। एवरीबडी हैज टू बी प्रेजेंट। ऑलराइट everyone, we'll carry on guys, everybody। आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ ऑन द अनअकैडमी वेबसाइट एंड वहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ हाउ यू कैन एनरोल फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लासेस and enjoy the best of the best classes with the Sankalp team guys। CA फाउंडेशन में दोस्तों आप लोग एनरोल कर सकते हैं और CA फाउंडेशन में आप CA फाउंडेशन और इंटर का कॉम्बो भी ले सकते हैं। प्लस एन
प्लस एंड आइकॉनिक दोस्तों हमारे दो प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लस एक स्टैंडर्ड है, आइकॉनिक एक नेक्स्ट लेवल। प्लस में बच्चे अभी आई थिंक दिस इज द लास्ट डे ऑफर चल रहा है, ले लो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड राठी10। तो अनअकैडमी की तरफ से देयर इज अ 10% फ्लैट प्राइस डिस्काउंट, यू विल गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट विद राठी सर का कोड राठी10। and if you go for combo guys, the total amount that is gonna come is only 34,635। can you actually imagine दोस्तों, इतने कम प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा अनलिमिटेड एक्सेस फॉर सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट कॉम्बो। फर्दर इसके बाद भी यू विल गेट फर्दर 10% डिस्काउंट ऑन रिडीमिंग योर क्रेडिट्स। आपके जितने क्रेडिट्स हो जाते हैं आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों को फर्दर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ये अप टू 10% है। ऑलराइट, सो थैंक यू गाइस आज के सेशन के लिए। कल कैरी ऑन करेंगे दोस्तों, कल कैरी ऑन करेंगे यहीं से क्वेश्चन नंबर 8 से। टिल देन टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।